Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video today I am going to discuss with you all about Judiciary Mains answer writing practice question number 9. This series we have started exclusively at Legal Bee and इस तरीके की innovative series आपको और किसी YouTube channel पर नहीं मिलेगी law के लिए and this is very helpful for preparation of judiciary examinations and इसमें आपके और भी कई benefits हैं. जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं. आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है एंड यू कैन कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड ऑल्सो आंसर्स टू दीज डिफरेंट कंसेप्ट्स दैट वी आर कवरिंग सब्जेक्ट वाइज ओवर हियर. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो स्पेशली जो प्रोसीजरल लॉज हैं, जैसे मैं आज सीपीसी का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाती है एंड आपकी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स आंसर फॉर्म में डिस्कस हो जाते हैं. एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ है इन द सेंस इसमें आपको आंसर राइटिंग के क्या क्या टिप्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और you can write to us hello@iexamb.com. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all such kind of beneficial videos. So let's check today's question. Identify the tests to be applied for granting temporary injunction to preserve status quo under relevant provision of CPC. सो इस क्वेश्चन को पहले आपको समझना होगा. वेन एवर यू राइट एनी आंसर्स ऑलवेज रिमेंबर ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड ट्राई टू ब्रेक दैट क्वेश्चन इनटू पार्ट्स कि आपकी जो मार्किंग होगी वो भी उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी मार्किंग होती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा ये देखने की कोशिश करता है कि आपने क्वेश्चन में जो जो चीज़ें मेंशन है वो सब कवर किया है या नहीं किया है. अब सपोज यहाँ पर दिया है टेम्पररी इंजंक्शन टू प्रिजर्व स्टेटस को. आपने टेम्पररी इंजंक्शन कवर कर लिया बट स्टेटस को के बारे में कुछ भी नहीं कहा, सो ऑब्वियसली आपके वहाँ पे मार्क्स कट होंगे. सो ऑल दी सिंपल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर वेन एवर यू आर राइटिंग एनी आंसर. So temporary injunction status quo topic is very important one from CPC and practically भी जैसे मैंने कहा litigation में भी ये चीज़ें काफ़ी helpful है. temporary injunction is very important. practice civil law litigation में ये बहुत important है. status quo के applications भी बहुत important होते हैं. status quo का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग इस आंसर में समझ जाएंगे. So let us start. The first point that you will be taking here is temporary injunction. But obvious, temporary injunction के बारे में है. First you have to explain what it is. It is an order by which a party to an action is required to do or refrain from doing a particular thing until the suit is disposed of or until further orders of the court. यानी कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप कभी भी मैटर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो एंड इट इज़ अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ एन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन. इट इज़ टेम्पररी इन नेचर. इट इज़ नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द मैटर. दैट इज़ वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. Temporary injunction is interim in nature. It is granted on interlocutory application of the plaintiff. Obviously plaintiff ही मांगेगा हमेशा ही. Granting of temporary injunction, it is a matter of discretion of the court. This is also something which you have to remember. ये discretionary power है जो court exercise करता है. कुछ particular circumstances में ही temporary injunction दिया जाता है and this depends upon the case to case basis. Section 37 of Specific Relief Act says temporary injunctions are such as to continue until a specified time or until further orders of the court and may be granted at any stage of the suit and are regulated by the CPC 1908. So ये कुछ important चीज़ें हैं जो first points में ही clear हो जानी चाहिए to make sure that the examiner knows you know very well what the concept is. Then it is a settled principle of law power conferred under Order 39 Rule 1 and 2 of CPC in granting and refusing injunction is discretionary and like other cases the discretion is vested in courts. यानी कि Order 39 के हिसाब से temporary injunction जो cover करता है it is going to be discretionary power. It is based upon the reasonable and sound judicial principles that need to be kept into mind when temporary injunction is being granted or refused. One more thing is that perpetual injunction. अब चाहो तो यहाँ पर perpetual injunction का भी एक लाइन में रेफरेंस दे सकते हो that it is
परमानेंट इंजंक्शन इट इज कवर्ड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जैसे टीआई सीपीसी में कवर्ड है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में परपेचुअल इंजंक्शन कवर्ड होता है. Temporary injunction may be granted by the court in following cases. Now you can enlist all the cases in which temporary injunction can be granted. So first one is when a property is in danger of being wasted. यानी कि अगर property waste होने वाली है, there is such kind of danger to the property, the interests of the plaintiff being affected gravely. If the plaintiff is able to establish that, then TI can be granted. या फिर प्रॉपर्टी रॉन्गफुली सेल हो जाएगी और एलिनेट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी. नेक्स्ट वन, वेयर अ डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट्स टू remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors. If such kind of threat is there, then also TI may be granted. Third, where a defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property that is in dispute in the suit. यानी कि प्लेंटिफ को बाहर निकालने का डेंजर है या उसे इंजरी करने का डेंजर है बिकॉज ही इज़ इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि उसका पीसफुल पोजेशन डिस्टर्ब हो जाए. अगर ऐसा कोई एक्टिविटी डिफेंडेंट कर सकता है और ये प्लेंटिफ को डर है, अगर प्लेंटिफ ये एस्टैब्लिश कर पाता है दैट देयर आर चांसेस ऑफ सच काइंड ऑफ थ्रेट, देन ऑल्सो TI may be granted. Very commonly asked remedy this is on this ground basically. Where a defendant is about to commit a breach of contract or other injury of any kind, then also it can be done. Breach of contract या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. हर बार हम सिर्फ प्रॉपर्टी इमेजिन करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए TI ग्रांट होगा, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही TI ग्रांट होगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इवन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स ऑल्सो टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड. Where a court is of the opinion that the interest of justice so requires. Now this is a general clause which gives discretionary power to the court that if any unique situation if comes before the court should have the discretion to exercise its power, judicial mind, and grant temporary injunction if required. Temporary injunction is based on the following principles. Order 39 Rule 1 and 2 of CPC. And what are these principles? That is important. Prima facie case should be there. If there is no such kind of case, for example, injunction against true owner of the property, it is very, very difficult to get injunction against the true owner of the property. If it is proved that he is the true owner of the property, how you can claim injunction against him? So prima facie case होना बहुत ज़रूरी है. Then irreparable loss should be caused or injury should be caused, यानी कि आप ऐसा threat बता सकते हो कि इससे ऐसा कोई loss होगा जो irreparable होगा, or else that injury will be of such a nature that you cannot compensate it in the future. So to prevent that, you need to take a preventive measure, because temporary injunction is basically a preventive relief. Balance of convenience and inconvenience. This is a very important point, that the court has to consider that out of both the parties, whose interests are at stake and which party is basically going to be at a safer side. Then the court will favor the party which is going to suffer or whose interests are going to be at stake. That party will be preferred by the court and temporary injunction can be granted in the favor. यानी कि एक बैलेंस किया जाएगा दोनों पार्टीज में से. अगर दोनों ही पार्टीज के इंटरेस्ट सेम फुटिंग पे है तो TI एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. बट इफ सपोज वन पार्टी, दैट इज अ प्लेंटिफ ओनली बेसिकली, who is going to the court with that application, is able to prove that his interests are at stake, are in danger, then the balance of convenience inconvenience के हिसाब से that is going to be in favor of the plaintiff and TI may be granted. Now we can move to the next concept, that is status quo. फिर हम इनकी relativity के बारे में बात कर सकते हैं in our answer. Status quo generally refers to the existing state of affairs or circumstances. It can be anything. So why status quo is very important in law and what purpose it solves basically. Let us understand that status quo order should be issued by a judge
to prevent any of the parties involved in the dispute from taking any action until the matter can be resolved. That means the parties are staying in the situation as it is. जो situation है उसी में रहेंगे until and unless the matter is decided, because you know civil court में matters years and years चलते रहते हैं. So by that time if the parties are taking any particular step and they are taking all the benefits of that property, then there is no sense of going on with the matter in court, because उससे पहले ही अगर वो प्रॉपर्टी को सपोज सेल कर दिया जाता है, सो फिर उस प्रॉपर्टी के बारे में बाद में डिसीजन लेकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा. अगर सपोज कैश में कन्वर्ट हो गया, then the cash will be utilized by somebody, so it is not possible, it is very difficult to trace that particular amount, and the transaction cannot be reversed. Then there is no sense of the decision of the court. So that's why status quo applications are moved before the court. What it seeks to prevent harm or preserve the existing conditions as it is रहेगा. तो जब डिसीजन आएगा आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर पाओगे. दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटस को, so that a party's position is not prejudiced in the meantime until a resolution is reached. आप कंसेप्ट भी समझिए और साथों साथ इस लैंग्वेज को भी अपना कमांड बनाने की कोशिश कीजिए. बेसिकली यू नीड टू डू दैट, then only you can develop your writing skills. You should be systematic, you should be very comprehensive in writing the answers, and at the same time you should be able to use this legal language. Try to download these PPTs of all the videos of this series. इस वीडियो के साथ अगर आप दूसरे वीडियोस भी चेक करते हैं, इससे पहले मैंने 8 क्वेश्चंस पर जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग डिस्कस किया है, and that you can check out in the playlist on YouTube of Legal B. Don't forget to subscribe but and check out the playlist, and ये सारे आंसर्स को आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. That will help you a lot definitely. Principle that is underlying the object to maintain the status quo is unaffected by any act of any party to the litigation pending its determination. अब ये basic object के बारे में बात हो रही है. So what are the basic objectives? Principles underlying status quo: equity, good conscience, justice. Now this objective and TI objective is near about same. We can say that they are based on the near about similar underlying objectives of equity, justice, but one thing is there which is different. TI will be restraining only the defendants. Plaintiff के against, plaintiff TI खुद के against कभी फाइल नहीं करेगा. But status quo जो है, status quo can be seeked even by the defendants. Status quo कोई भी seek कर सकता है, plaintiff भी seek कर सकता है, defendant भी seek कर सकता है. So this is something which is seeked by anybody, whereas TI is always seeked by the plaintiff. Defendant will not seek it. If we have a better understanding of this concept, we can also take into consideration one case law. Generally, try to include cases in your answers. It becomes more effective. Honorable Supreme Court has, in the case of Gujarat Bottling Company versus Coca-Cola Company 1995, held that the object of interlocutory injunction is to protect the plaintiff against injury by violation of his right for which he could not be adequately compensated in damages recoverable in the action if the uncertainty were resolved in his favor at the trial. यानी कि अगर उसके फेवर में डिसीजन आता है तो उस डिसीजन को इन्जॉय करने के लिए, उसके फ्रूट्स को इन्जॉय करने के लिए एटलीस्ट वो सब्जेक्ट मैटर जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो तो उस स्टेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर वो प्रॉपर्टी पहले ही डिमिनिश हो जाती है तो देयर इज नो सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन. That is what is the thing which was discussed about in this case as well. The need for such protection has, however, to be weighed against the corresponding need of the defendant. Both the things need to be considered, the need of the defendant and need of the protection that will be granted by granting TI. Both of them need to be compared and balance of inconvenience need to be checked. ये case में काफ़ी अच्छे से explain किया गया है. So you can note down this case name, and yes, better is to download the PPT and check it out how you can go through. अगर आपको इसके अलावा भी कोई केस पता है आप include कर सकते हैं. Thus, even after granting TI, an application for status quo can be moved forward and can also be extended from time to time by the court. This is also one thing which you have to remember. एक बार आपने status quo application file किया court में, you can also extend that application from date to date. यानी कि वो status को
मेंटेन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करने पड़ते हैं इंटरिम, एंड यू कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट दैट स्टेटस को बी मेंटेन्ड. So that can be from date to date also. Court can grant it till the next date also, or court may grant it till the final disposal of the matter also. It is all upon the discretion of the court. So we can conclude, grant of temporary injunction and status quo are complete discretionary powers of the court, and the courts need to exercise that power sparingly, keeping all the basic principles in mind which we have discussed, in what cases it can be granted, and yes, justice and equity are the basic underlying principles in both. So this was all that I had to discuss with you all. Try to write your answers in this manner, make them more comprehensive. If you have any queries, do reach out to us at hello@exambi.com. आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.iexambi.com. Check out all the courses and prepare 50% faster with iExambi. Thank you everybody.